We have a interesting session coming up, a small session, but an interesting one. We'd like to ask our audience that why do you think property prices in Bhubaneswar are higher to similar cities, if you consider cities like Bhubaneswar in the country, but why do you think property prices in our state, the capital of Odisha, Bhubaneswar, are higher? So this If is anybody want to answer this, we'll request with a mic jodi forward karajibo if somebody wants to answer this question. whatever your view is, you can introduce yourself and Yes. answer to this very simple question, which is not our opinion, So your which is a thoughts fact. is it can be your opinion as well. What do you think? Yes. Namaskar. Myself Jeetu Satpathy. I'm basically a cricketer and turned into a real estate consultant for last 15 years in Bhubaneswar. So sir has a very good presentation regarding Assotech and the background of the total industry. And thank you so much. I have a small question that he has asked that the price in Bhubaneswar is very much higher compared to all two-tier cities in India. बट एक ही बात ये है कि इसका मेन रीज़न है लैंड कॉस्ट एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़. आपको ऐसे लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टीज़ मिलना भी बहुत मुश्किल है और जो कि आपको गैदर करके एक प्रोजेक्ट बनाना कितना मुश्किल है, ही नोज़ बेटर. सो वी फाउंड ऑल दिस डिफ़िकल्टीज. बट एक ही छोटा क्वेश्चन है सर के लिए. द प्राइस यू हैव कोटेड इन द मार्केट राइट नाउ, ये कंपेयर्स द टेक्नोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे आप बना रहे और जैसे प्रीवियसली था और अभी जो बना रहे और लैंड कॉस्ट एट द अदर कॉस्ट, एक्चुअल व्हाट इज़ द मार्जिन यू शुड कीप, और एल्स आप अभी मार्केट में डिमांड है बोल के यू आर राइजिंग द प्राइस. सो is that the reason? That is the question. Thank you. Okay. Can we give a microphone to Aditya, please? That's like one professional asking another a very important question. आपका क्वेश्चन था प्राइसेस हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, नॉट जनरली क्यों ज़्यादा है, हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, हमारा क्यों ज़्यादा है. सो दो तीन फैक्टर जो मैंने पहले भी बोला सर. एक तो जैसे आप ही ने बोल दिया, लैंड कॉस्ट इज़ वेरी हाई. ऐसे भी सर आज के ज़माने में किसी भी डेवलपर के पास, आप टॉप लोगों को छोड़ दीजिए, DLF गोदरेज को हटा दीजिए, इतना पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है पॉकेट में आज की डेट पे कि वो लैंड आउटराइट खरीद ले लैंड ओनर से. तो व्हाट वी डू इज़ वी गो इनटू अ JD मॉडल, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मॉडल जाते हैं. एंड जितना आप शहर के अंदर करेंगे, ये मॉडल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको परसेंटेज देना पड़ता है लैंड ओनर को. तो आप शहर के अंदर जैसे करेंगे, आप 50% से नीचे कोई नहीं मानेगा. आप शहर के जितना बाहर जाएंगे उतना कम होते रहेगा. हमारे केस में उसी के बीच में कहीं आ रहा था, 50 से नीचे आसपास. बट दूसरा चीज़ मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल प्राइस बहुत बढ़ गए हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एल्यूमिनियम का प्राइस अभी अराउंड 6-6.5 हज़ार रुपये चल रहा था. अभी रिसेंटली मैंने एक परचेज ऑर्डर अभी दिया है अपनी कंपनी का, उसका मैंने कोट किया है प्राइस, एंड आई एम नॉट किडिंग, 12,000 रुपीज़ चल रहा है उसका. इट्स डबल्ड. सीमेंट का आज से 6 महीने पहले सेम सिचुएशन था. अब चीज़ क्या होती है ना कि आप आज देख रही है कि प्राइस बढ़ा है, मैं आपको बताऊं तो बल्कि प्राइस कम है. मैं आपको बताता हूं क्यों. मान के चलिए आज आपने मुझसे फ्लैट ले लिया एज अ सर्टेन प्राइस, करेक्ट. अब कॉस्ट जो आपका फ्लैट का है बनाने का, वो तो फिक्स नहीं है, वो तो आज के मटेरियल प्राइस के ऊपर बेस्ड है. अगर मैं रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, मेरा मार्जिन वैसे ही कम हो जाएगा. बट मैं आपसे तो वो प्राइस नहीं बढ़ा सकता हूँ एक बार आपने खरीद लिया तो वहाँ का ब्रंट तो फेस करते डेवलपर्स, अभी कर ही रहे हैं. दूसरी चीज़ मैं क्या बोलूँगा कि जो माइवन, जैसे मैंने आपको बताया, दैट टेक्नोलॉजी वी आर ब्रिंगिंग एंड वी एक्चुअली कंप्लीटेड आवर फेज 1 बिकॉज ऑफ दैट, कि इसका इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. मतलब अपफ्रंट आपको बहुत पैसा देना पड़ता है. एंड नाउ डेज बिना, और ये ऐसा है ना कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए आपको, फिनिशिंग करने के लिए नहीं चाहिए. और बैंक्स का क्या होता है यूजुअली रूल कि आपका कंस्ट्रक्शन से पहले कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देना बहुत ही मुश्किल है. वेरी फ्यू बैंक्स आफ्टर आपको डबल देना पड़ेगा अपना कोलैटरल, तब जाके देंगे. तो किसी के पास है ही नहीं इतना रिसोर्सेज करने के लिए. इससे अच्छा मार्केट से पैसा ले लो बुकिंग करवा के. सो दीज आर फ्यू रीजंस कि क्यों प्राइस हमें बढ़ा के रखना है. और इशू क्या है ना सर, आज की डेट पे द प्राइस इज नॉट दैट मेजर इशू. द मेजर इशू इज पोजेशन. पीपल आर विलिंग टू पे 10 lakhs 20 lakhs मोर, पर अगर उनको टाइम से घर मिलता है तो दे आर रेडी. So that is just my 2 piece.
Thank you. I think we have another question, so please. Hello, Aditya. This is Sakti Mohanty. So I have an allegation against you, and take it very sportively and friendly. And I liked your talk. You are really building quality products, quality homes. But I have a question that you have already snatched, taken away Chandni. You have taken away all the Chandni from our life. You have snatched sunrises from our life. You have snatched sunsets from our life. And you have minimized the sky, I view usually. So how will you take, what is your take on this question? Because 20 years after, all the builders will get a question. People will come to the roads and will ask the builders that you have taken all these sunrises, sunsets, and Chandni and skies from our life. Thank you. Sir, I'm so sorry. Like, I think Aditya will address your concerns on like a... No. This platform He is has not to for answer the it. No, concern. because he has to Moving on answer the because he's a second very question. promising builder. Acha. And I have, as a Okay, taker, I have okay. all the rights to ask the question. You can't stop me asking questions. Thank you so much, sir. We can have a one-on-one during lunch. But as a common person, if I have to really give my opinion on this, I will say somewhere overpopulation has to play a bigger role. If you are too many people, eventually you will live in an apartment and you will live like virtually, Okay. I mean vertically than horizontally. That's Okay. the future and nobody can actually change that. Okay. There are some senior journalists also sitting here, so in the audience. We'd like to know from you, sir, also, if you can share your view, why this thing is happening in India. Akshay, how is there? Total land properties, whatever are there, it belongs to government, mostly under the GA department. Say, for example, Unit 1 or Unit 2, we can take only any unit. Small quarters are there, where at least 1/10 of the area can be converted to multi-storied buildings, and the total things can be accommodated. Another mistake is there by the government. They are declaring one after another the site for international airport. Say, for example, near Khordha, Jankia, this, that, all that. Now they are planning for Puri. Unnecessarily, the price hike is being made by the builder and the government combined. So they don't have any specific planning how to minimize. The total population of Bhubaneswar is not more than 12 lakhs. Right. Why it will be spread to that extent and there will be no space for the common man to live over here? So my question is, let the builders have their different approach the government to demolish these small quarters and to go ahead with the multi-storied buildings. The cost will be theirs and it will be cheaper. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your- sharing your opinion with us. I think आमे चाहिबो कि आजी जो जनता आम सहित अछंती तांकर गोटे मेजर रोल रहू ए कॉन्क्लेव को सफल करिबारे. So we have a hypothetical question that I just want to supplement, Okay. sir, the straight answer to your question is that land availability is a major concern in Bhubaneswar. You have part of a city that comes under heritage zone, and in north of the city, it comes under flood zone. And there is a little scope for the developers to acquire land. That's the major concern, because we don't have adequate land in Bhubaneswar. And other parts of the city, you find that the lands are litigated. So the land record is not properly documented, and the process is on. And I have a small question for Aditya. When many developers are there, when now that Assotech has rolled out some products, there is a beeline of customers for your products. But there are developers, those who are approaching customers to sell their products. What is your competitive advantage or USP that make customers, that actually force customers to make a beeline for your products? Okay. We do have a one-on-one session after this. So let's finish this session and then we can move sort on. of time. Yeah, So thank you. we are moving forward. We have one more question, another interesting one. We are coming to you. Please, Sulagna, if you can. well, I think जदि आपण मानक पचरा जाए आगामी फोरसाइट रो थीम कौन हबा उचित. You have the power to decide that. बा जदि एई वर्ष ही आपण मानक निष्पत्ति नवार थिला जे फोरसाइट रो थीम कौन हेई पारि थांता ताहले आपण माने से थीम को कौन रखिबा पई
बेसी प्रस्तुत होता बा बेसी आशा करते जे फोरसाइट थीम या हवा उचित थिला जदि कि कहबा चाहती We are expecting some interesting answers. बहुत बुद्धिजीवी Okay. अछंती. यस ओके यस यस आपणक मतरे फोरसाइट रो थीम कोन हबा उचित? ओके आमे एजुकेशन संपर्क रे चर्चा भी करिछु. So we are in sync with your opinion. We spoke about digital education, तारो importance and future. अच्छा निश्चित भावरे we are noting that mobile is becoming an addiction. Anybody else? That's all. Okay, that's all. You want to talk? Thank you. Okay. Namaskar everybody. I think there is so many topics has come to your mind when you talk about foresight because this is when it foresight. Tenu being an actor, something I would have really definitely you should talk about our cinema industry and also in addition to that, I don't know why you have not included politics this time, ma'am. Not good. Pinky, you should join us for the post-lunch session. Both your questions will be answered. I'll try for that. Thank you. It seems we quite read your mind and we have something very surprising and informative for you, especially and everyone who agrees with your opinion. Amara post-lunch session re apanku rajaniti bhi milibo au cinema samparkiya tathya bhi milibo. Thank you. I think there is another gentleman here who wanted to say something and the lady. And if you can make it short, we are actually running out of time. Maybe health in education because Odisha people mostly facing the challenges in this lockdown. 2 years, we are facing a lot. Thank you. Thank you. We agree. Thank you. Education. Yeah, education. I'm Lily Janamani. Yeah, thank you. So I have two persons saying कि education को theme We have another person. Sir, please, you can add your opinion. I would like to ask the audience, mo opinion रे ओडिशा भाषा लुप्त होवा को जाउची कारण प्रेजेंट जनरेशन अधिकांश ना पढ़ी पारुचंती ना कहि पारुचंती. What are we doing about it? How are we planning to address this issue? Definitely very good point. भाषा निश्चित भाव में आम कहीपर जे गोटे प्रभावशाली टॉपिक जहाँ पर आलोचना माने समस्ते करवा उचित कोठ ना कोठी कारण जो युवपीढ़ी माने सामना को आसुचंती बहुत क्षेत्र रे कथा देखिबा पाइ मिलुची भाषा गोटे बड़ टॉपिक भलो टॉपिक हेई पारे निश्चित भाव रे. एनीबॉडी. Hello everybody, so this is Sugani. I'm an IT consultant currently working in Ernst & Young. Previously I'm an ex-Infosyn. So I think this Foresight is such a great platform and such a great program for all our young minds as well as for all the age groups. It's such an educative platform. I believe the next session of Foresight could be a topic on nation building. So nation building especially for our young minds because I think the young minds shape our future, our nation's future and India is what with our young minds. So I would like to talk about like the nation building and how we can like what sir said, like the importance of our language Odia and the mother tongue and influence and everything. So and making our young minds especially realize the importance of our soil, our country, our state. Yeah, this thing. So well put together. Thank you very much. Thank you. Au kehi nijara. Yes. आसंता वर्ष पाई मु कहबी अपन चिंता करिवे जे जोड़िए बड़ समस्या जे हमर पिछा छाड़ुनी ता उपरे आलोचना पाई से होची गोटे स्वास्थ्य हेल्थ केयर आरटा होची बेकारी हाउ टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स. गणेश्वर बाबू जदि आम यही वर्षर कहवा आपन ताले कौन विचार करछन जे एई वर्ष आउ कौन करथिले भल हेई पारथांता बोली बा आपन को लागुची एई वर्षर समस्या जहा को एई वर्ष आलोचना करिवार थिला. Nothing like that, everything is appreciated. Thank you. धन्यवाद. जणे शुभेच्छु ही एक कथा कहि परिबे सब बेले आपन को मार्गदर्शन आम पई जरूरी थिला और रहिबो. या एक्चुअली मु जहाँ कहवाई चाहूँगी गणेश बाबू अलरेडी टी हिंट्स देदेले ए वर्ष जहाँ भी मुझे आशा करूली
जे वर्तमान जो अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्री हैज गॉन स्टार्टअप मान को केमिति प्रोत्साहन दिया जाय परिबो एम्प्लॉयमेंट केमिति क्रिएट करा जाय परिबो जिते इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ थिला बर्तमान प्रायतः सब स्कूज होगलानी ऑलमोस्ट बंद हवा भली MBA कॉलेज रे भी से भाया स्थिति तेणु एसबुड़ केमिति आम रिवाइव करि परिबा इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट एरिया रे आम केमिति देई परिबा लास्ट 20 इयर्स कथा कहवा एभलिया किसी से भाया किसी आखि दृष्टिया किसी इंडस्ट्री ओडिशा रे भी हेइनी जोटा कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिबो आम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कथा कहि परिबा प्लस इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट गोटे इंडस्ट्री जदि गोटे होउची इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मोर आई थिंक 20 टाइम्स क्रिएट करुची 20-25 टाइम्स तेणु से भाया स्थिति बा से भाया डिस्कशन जदि हो पारि था मु भावुची किसी बेसी माने सरकार हूँ बा आपणकर एंटरप्रेन्योर्स हूँ से किसी मोटिवेशन आसी पारि था जोटा कि आम कहीपर टाटा प्लेर जो भी सी जो देउथले फीडबैक जो भी तांकर व्यूज इट वाज रियली इंस्पायरिंग so many things it can be taken into account many people can come together so that nation building re ba apna state building re job creation is much more important. Thank you. Startup can be very good. Yes. Thank you. Can you have mic? Yes. Thank you. More actually got a question प्रश्न अच्छी since एठी बहुत knowledgeable audience अच्छंती आ ए प्रश्न मो माइंड रे बहुत वर्ष माने जो जेते बळे मु ओडिसा आसिली अबाउट 26 years ago आउ सब बळे मो माइंड रे क्वेश्चन थिला परहैप्स आपण माने एठी अच्छंती जो माने हमकु कहि परिबे और कैन गिव मी योर ओपिनियन ऑफ व्हाई दिस इज सो मु सब बळे देखि छी अनलाइक स्टेट्स लाइक गुजरात जोठी एंटरप्रेन्योरशिप एंड गोटे एंटरप्राइज जो करिबार इच्छा अच्छी लोकंकर बहुत थाए बट ओडिशा रे आई हैव नॉट सीन दैट एंड एबे अवश्य नाउ आई मस्ट से कि आफ्टर 26-27 years ऑफ बीइंग इन ओडिशा मु देखुची से चेंजेस ता होची ग्रेजुअली किंतु आपण को मतरे काहे कि वी आर नॉट एबल टू बिकॉज जेमतिया कहंती गुजरात इज नॉट अबाउट एनीथिंग बट द पीपल ऑफ गुजरात द गुजरातीज but can we say the same about Odisha? Is Odisha about the hardworking entrepreneurial Odias or am I wrong in thinking that way? मैडम आप बहुत भल कथा गोटे कहले सेटा को गोटे क्लू नहीं कि मुझे कहना चाहूँगी आगुरी भी भाभी मो ना हूँ मनोरंजन मिश्र मु ओडिशा एनवायरनमेंट सोसाइटी जॉइंट सेक्रेटरी अच्छी गोटे प्रधान विषय हूँ आम सब कहूँ अन्य माने कौन करें जेको गोटे थीम नियंतु आपण कौन करें से बहुत भलकर कहीपरि व्हाट अदर्स आर सपोज टू डू कैन यू जस्ट ब्रिंग ए चेंज इन दिस व्हाट आई कैन डू द टाइम हैज कम बर्तमान समय आम पाखे आसी आमे प्रत्येक इंडिविजुअल आमे कौन करें बर्तमान पंच महाभूतर 3टी महाभूत ऑलरेडी अफेक्टेड हो सारा जोटा कि आम सद्गुरु शुणिले माटी पानी पवन आउ 2टा महाभूत रहा जोटा गले पृथ्वी ध्वंस हो तेणु गोटे थीम को नहीं करी से एजुकेशन हो कि नेशनल नेशन बिल्डिंग हो कि एनवायरनमेंट हो गोटे थीम को नहीं करी ता देहरे गोटे पंच लाइन आम दबा मु कौन करी याद तेणु यहीटा गोटे जनजागरण भाव गोटे स्रोत सृष्टि हम तादर किछिटा परिवर्तन निश्चित भाव में आसो जदि एंटरप्रेन्योरशिप नवाक चाहते आम ओडिया जाति को ऊपर को उठाया चाहते आहरी एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरियल रोल प्ले करवा दरकार देन ओके फाइन लेट अस टेक दैट एज ए थीम एंड मु कौन तादर करी व्हाट आई कैन डू इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अदर्स और लुकिंग एट द गवर्नमेंट और एनीथिंग गुजरातीज आर नॉट एवरीथिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट yes policies are there but there is a general awareness amongst the people of that state. So we can also think in the same line. Okay, this is my another point with respect to the Assotech. Very quickly, I will say, Bhubaneswar is facing big problem on hot skills of maintaining the large societies because Assotech will bring high-end technology. They will build it and then go away. But who will maintain it? Who will run it? There is a severe scarcity of technicians in and around Bhubaneswar. You go to any apartment, there is a problem.
So this also needs to be addressed. Thank you. Yes, regarding Jagi ma'am's question, ମୁଁ ଟିକେ आंसर देवा ପାଇଁ ମୁଁ चेष्टा करिବି. Basically आमे ओडिया माने बहुत बढ़िया, किंतु प्रॉब्लम अच्छी जे आमे जो मैडम कहते गुजरात कहीं आगे अच्छी ओडिशा कहीं पछरे अच्छी. बिकज गुजरात रे आपण देखिबे जदि 3-4 जनरेशन पूर्वरु दे आर बिजनेसमैन. मु जेतबेले बिजनेस करिया को बाहरली मो फादर केबे भी जदि मु जोड़े ऑप्शन रखिबी बाबा मते किछि पैसा दियंतु मु बिजनेस करिया को जाउची, बाबा कहे नाही से पियन चाकेटे हो पछक सेठी जा. तो से माइंडसेटा जो अच्छी सेटा को आस्ते आस्ते आम चेंज करि पारु नांती. वर्तमान नो डाउट किछि बिजनेसमैन अपकमिंग आसिलेनी एवं आमे कलेनी. सो आगामी थीम हमर हबा दरकार फोरसाइट रो कि हाउ टू बिकम ओडिशा नंबर 1, नॉट सीएम नंबर 1. ठीक है. Thank you very much. I think प्रोत्साहन आवश्यकता अछि. We agree. मैम को जो डाउटा थिला कहीं एटा हे पन्ने गोटे कथा ऑडियंस आछंती एवं आज कोटी कोटी लोक भी देखुचंते. ओडिशा इज द ओनली स्टेट जार गोटे आम जाचे तार मैरीटाइम हिस्ट्री अच्छी. ओडिया पीपुल आर मोर एंटरप्राइजिंग इंजीनियरिंग वाइज आप देखिए आम ये इंजीनियरिंग जो मार्वेलस आम ये मोनुमेंट्स तैयारी करचे यहाँ कौटी भी ना. यहाँ हूँ ओरिजिनल उत्कलीय ये इंजीनियरिंग आप देखिए निकट अतीत आपंकर एएसआई जो चीफ आसी ही वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट आमर ओडिशा भी आपंकर 600 इयर्स एगो आम से जो लुहा यूज होइए आयरन बीम एवं आम एत एंटरप्राइजिंग थिलु जाभा बन्य सुमात्रा आम से जाऊँ एवं ट्रेड एंड इंडस्ट्री आमर प्री हिस्टोरिक एज रे इंडस्ट्री थिला. किंतु नेक्स्ट जो फोरसाइट आप डिस्कसन करेंगे से गोटे डिस्कसन पॉइंट हो जे जो प्री हिस्टोरिक एज रू आमर गोटे ग्लोरियस ट्रेडिशन ट्रेड ट्रेडिशन थिला. इन बिटवीन व्हाट हैपेंड जे गोटे स्लथनेस आसला एवं आमर जो स्पिरिटा एंटरप्राइजिंग स्पिरिटा सेटा ह्रास पाइला. एगेन वी आर री इमर्जिंग एवं आमे वी आर असर्टिंग आवर लीडरशिप बोथ इन एंटरप्राइजेस एंड अदर फील्ड्स ऑल्सो. जब इन बिटवीन व्हाट हैपेंड जे ओडिया भितर ये गोटे स्लथनेस आसला. किंतु इट्स ए नोशन मैम जे आमे ओडिया वी आर मोस्ट एंटरप्राइजिंग पीपल इन द कंट्री एंड वी हैव. थैंक यू एवरीवन फॉर योर ओपिनियंस. थैंक यू मैम. धन्यवाद आम ऑडियंस को एते सुंदर निजर मत निजर समालोचना तर्क सबू आज रही कॉन्क्लेव रे प्रस्तुत कले. समस्त को नमस्कार. मैडम जो क्वेश्चनटा कर गोटे कथा कहबी बोधे ओडिया मान को बहुत लाज लगे. प्रथम कथा कहबी आम जो बाहर को जाऊँ ओडिया कथा कहबी आमको लाज लगे. आपन देखिए कलकाता स्वाभिमान आम जो स्वाभिमानी हवा दरकार. ओडिया आमर एत सुंदर भाषा आम संस्कृति एत सुंदर. आम जो बाहर को जाऊँ कलकाता जाऊ हैदराबाद जाऊ सेठी आपन जते बेले कैब ड्राइवर मान संगे भी आप इंटराक्ट करेंगे से लैंग्वेज कथा कहती. इवन ओडिशा रे मध्य आपन जो कैब ड्राइवर से कहे मैडम मु हैदराबाद रू आसी मुझे थोड़ा थोड़ा ओडिया आता है किंतु लेकिन आम जिते बड़े जाऊ आम इंग्लीश रे कहबो अधा खंडिया बंगाला रे कहबो किंतु किंतु आम ओडिया रे कहबोनी. प्रथमे जेमती सर कहले आम प्रथमे आम भाषा को सम्मान देवा उचित. आम भाषा को सम्मान देले निश्चित ओडिशा नंबर 1 हम. बहुत बहुत धन्यवाद. मातृभाषा पाई प्रेमटा मन रखले हेनी देखा जा दरकार. दोज वे वेरी स्पेशल आई थिंक फीडबैक जहाँ को आम सब मन रखू.